पास होने के बाद that I am going to send it. आज आपका हमारा विजिबिलिटी नहीं रहेगा, आपको खाली क्वेश्चंस आएगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट। चलो बेटा शुरू करें हम। पेपर तो आ रहे हैं ना? Question number 1. In unicellular organisms, all functions like digestion, respiration, and reproduction are performed by। आपके पास एनसीईआरटी बुक रहना है बेटा, आपके पास एनसीईआरटी बुक रहना है। In unicellular organisms, all functions like respiration and reproduction सब एक are performed by। Okay. Cell, very good beta. Cell. Okay. Next, in multicellular organisms, function like digestion, respiration, and reproduction are performed by dash in a well-organized manner. Yes, beta. Yeah, different group of cells, इसको हम बोल सकते हैं either tissue or we can call it as organ or we can call it as organ system। एनसीईआरटी का सेंटेंसेस है बेटा, आपको एनसीईआरटी आपके साथ रहना है। The body of simple organisms like what is made of different types of cells in the and the number of cells in each type can be in thousands। Which example के साथ दिया ये? Very good, very good। Hydra, it was given with Hydra। Simple organisms का वो Hydra example लेके बोल दिया। Human body is composed of billions of dash to perform various functions। आ गया आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड। जितना हाँ फास्ट आप करेगा ना बेटा, इतना फास्ट हो जाएगा हमारा। ओके, इन मल्टी सेल्युलर एनिमल्स ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances
perform a specific function. Such an organization is called. Such an organization is called. क्या बोले बेटा? टिश्यू. वेरी गुड. टिश्यू बोलते हैं ना? Okay, you may surprised to know that all complex animals consist of only dash basic type of tissues. कितना type of tissues रहेगा बेटा? How many type of tissues can be seen over? पकड़ के रखे ना NCERT? Yes, very good. 4 types of tissue. Okay. The dash are organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart, kidney. क्या है बेटा? Tissues. Very good. Very good. When two or more organs perform a common function by their physical and or chemical interaction, they together form. They together form. Very good. Very good. Organ system. They together form organ system. Okay. The dash ये blank fill up करना है बेटा. Split up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as a whole. अभी आंसर दे सके तो आप दे सकते. Otherwise, you do one thing. आप एनसीईआरटी देखो बेटा. लाइन लाइन के साथ जा रहे हैं हम. Yes, very good. Cells and organs. Cells है बेटा. Tissues, organs and organ systems. Cells, tissues, organ and organ systems. Okay, the structure of the dash vary according to their function. Therefore, the tissues are different and are broadly classified into 4 types. क्या है बेटा 4 types of tissues? Very good. Epithelial, connective tissue, and muscular tissue, and fourth, nervous tissue. The fourth, nervous tissue. Very good, bada. Keep going, keep going. 1 minute, 1 minute. चलो.
We commonly refer to an epithelial tissue as क्या बोले बेटा आप? We commonly refer epithelial tissue as, या जनरली क्या बोलते हैं हम? एपिथेलियम. एपिथेलियम. वेरी गुड. Okay, on the basis of dash, the cells of the cell simple epithelium further divided into three types. On what basis, beta? On what basis? Yes, very good. Structural modification. अगर आपको दैट आया तो ओके बेटा, नहीं तो आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपके पास रखिए. द थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलिया आर, द थ्री टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलिया आर, क्या है बेटा? नंबर वन, simple squamous epithelium. Number two, simple cuboidal epithelium. Number three, simple columnar epithelium. Simple squamous, simple cuboidal, and simple columnar. Plural form of epithelium. Plural form of epithelium. क्या बोले हम? Plural form. Yeah, very good, very good. Epithelia. Okay. There are two types of epithelial tissues, namely dash. Epithelial tissue का two types बेटा. Simple and compound. Based on the number of layers which they have, we classified it into simple and compound. Epithelium, which is composed of a single layer of cell and function as a lining for body cavities, ducts and tubes. सुपर, वेरी गुड. जितना फास्ट आंसर आपको आएगा ना, दैट हम समझेंगे दैट इतना फास्ट आप समझ गया टॉपिक. एपिथेलियम विथ टू और मोर सेल लेयर्स. Compound epithelium. Epithelium with two or more cell layers. Compound epithelium. Very good. Next, epithelium which functions as lining for body cavities, ducts and tubes. Epithelium which functions as lining for body cavities, ducts and tubes. थोड़ा सोचो बेटा. Which functions as lining for body cavities, ducts and tubes. Very good. Simple epithelium. क्या है बेटा वो? Simple epithelium. Okay, epithelium whose main function is to provide protection against chemical and mechanical stresses. Compound epithelium. Very good. Compound epithelium. Epithelium which has a protective function as it does in our skin. Yes, same. Compound epithelium beta. Okay, the epithelium of the proximal convoluted tubule of the nephron in the kidney has proximal convoluted tubule of the nephron in the kidney. Very good, very good. Compound nahi beta. Microvilli. Microvilli. If the columnar or cuboidal cell bears cilia on their free surfaces, they are called ciliated. Ciliated epithelium. Okay, chalo. Identify the tissues as epithelial, connective, muscular, neural, base. The based on the given characteristic feature. ये देख के बताना पड़ेगा बेटा आपको. ये है options. Epithelial, connective, muscular, neural. Okay. So next, let us start. This tissue has a free surface which faces either a body fluid or the outside environment.
and thus provide a covering or a lining for some parts of the body. आप recognize करो ये कौन सा tissue है. Very good. Epithelial tissue. Epithelial tissue. Okay. All cells are held together with little intercellular material. Little intercellular. So वही है बेटा epithelial tissue. Okay. Then these tissues are most abundant and widely distributed in the body of complex animals. Tissues are abundant and widely distributed in the body of complex animal. Yes. Connective tissue है वो. Connective tissue. Introduction में देखो बेटा. The cells are compactly packed with little intercellular matrix. Epithelial tissue. It is nearly all animal tissues, specialized junctions which provide both structural and functional links between individual cells. क्या बोले स्पेशलाइज्ड जंक्शंस को? सेल जंक्शंस. जो लोग आंसर रॉन्ग कर रहे हैं ना, तो आपको नोटिस करना होगा वो कहां पे रॉन्ग हो रहे हैं आपका. ओके. Then the range from soft connective tissues to specialized types include cartilage, bone, and adipose and blood. नहीं बेटा, ये एक बार देखिए, सेल जंक्शन नहीं है आंसर. कनेक्टिव टिश्यू है वो. लाइन कहां पे है देखिए आप. नीचे का भी है सेम. कनेक्टिव टिश्यू. ऑल एनिमल टिश्यूज में बोले ना ये स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स. कनेक्टिव टिश्यू होगा बेटा वो. ओके. नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट. Identify the given with respect to squamous, cuboidal, columnar. 3 options रहेगा बेटा आपको, ये देख के बताना होगा. It is made of a single thin layer of flattened cell with irregular boundaries. Super. Squamous. This epithelium is composed of a single layer of tall, slender cells. Very good. जितना फास्ट आंसर आ रहा है आपसे. एक काम करेंगे बेटा, टाइप करना मुश्किल होगा ना आपको. दैट आई विल डू वन थिंग, आई विल मेक इट लाइक दैट. ए बी सी रखूंगा, आप ए बी सी बोल सकते हैं. इजी है ना. आई एम मेकिंग हियर ए बी सी. ओके. सो ये इजी होगा आपके लिए. चलो बेटा, जस्ट खाली ऊपर देखिए ए बी सी बोलिए. स्क्वामस ए, क्यूबॉइडल बी एंड कॉलमनार सी. ओके. चलो अब ये बोलिए बेटा. एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स. या ये अच्छा होगा ना. क्यूबॉइडल. वेरी गुड. देयर फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई. क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार. या क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार. वेरी गुड. Their function is to move particles or mucus in a specific direction over the epithelium. या इसके बारे में ही बोल रहे हैं ना हम, क्यूबॉइडल और कॉलमनार. Their nuclei are located at the base. किसका न्यूक्लियर है बेटा? कॉलमनार. वेरी गुड. They are mainly present in the inner surface of the hollow organs like bronchioles and fallopian tubes. Inner surface of the hollow organs like bronchioles and fallopian tube. Special है ना. columnar we can say that किसको बोले हम, cuboidal और columnar. कौन सा है बेटा? ciliated epithelium, either cuboidal or columnar. Your BCB right है बेटा, ciliated epithelium, because ciliated epithelium might be cuboidal or columnar.
This is commonly found in the tubular part of nephrons in the kidney. Yes, cuboidal. They are found in the lining of stomach and intestine and help in secretion and absorption. C, yeah, columnar. They are found in the walls of blood vessels. Walls of blood vessels, beta. Squamous. This is commonly found in ducts of glands. Ducts of glands. कहाँ पे? Cuboidal. They are found in the air sacs of lungs. Yes. Simple squamous epithelium. They are involved in functions like forming a diffusion boundary. Diffusion boundary. Yeah. Super. Squamous. It is to its main function are secretion and absorption. नहीं बेटा स्क्वैमस हो गया अभी आंसर बताओ इसका मेन फंक्शन इज सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन स्पीड नहीं चाहिए आंसर चाहिए सोच के बताइएगा किसके ऊपर बोला ये क्यूबाइडल एपिथेलियम है बेटा क्यूबाइडल एपिथेलियम some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called क्या बोले बेटा इसको glandular epithelium glandular epithelium okay on the basis of the mode of powering of their secretions glands are divided into two categories namely based on mode of powering of their secretion the glands are divided into two categories namely yes exocrine and endocrine exocrine endocrine beta glandular cells in the goblets of the alimentary canal glandular cells in the goblet cells of the alimentary canal what are they यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर वो बोलना पड़ेगा आपको यस यूनिसेल्युलर बेटा यूनिसेल्युलर glandular cells in the salivary glands are glandular cells in the salivary glands are unicellular or multicellular yes beta multicellular very good the two types of glandular epithelium are वही है ना अभी तक जो बोले हम यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर glandular epithelium which consists of isolated glandular cells is called isolated glandular cells very good unicellular beta unicellular okay glandular epithelium which consists of cluster of cells cluster बोले तो ग्रुप है ना चलो मल्टी सेल्युलर वेरी गुड glands secrete mucus saliva earwax oil milk digestive enzymes and other cell products are yes exocrine products of endocrine glands are called
एंडोक्राइन ग्लैंड्स का प्रोडक्ट्स को क्या बोले बेटा हम? वेरी गुड, वेरी गुड, हार्मोन्स। ओके, सक्सेसफुली कंप्लीटेड फर्स्ट 50। हमारा फर्स्ट 50 हो गया बेटा, सक्सेसफुली कंप्लीटेड फर्स्ट 50। कुछ स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, ये क्लास होने के बाद आपको ये पूरा पीडीएफ मिलेगा। And the question sum we are going to discuss today, and tomorrow we are going to discuss some. But आज तो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मिलेगा बेटा, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अभी हमारा ये चैप्टर में थोड़ा बचा हुआ है फ्रॉग। ओके, सो या वी आर सक्सीडेड डेफिनेटली, ऑल वी आर सक्सेसफुल। ओके, नहीं बेटा आज तो भेज रहा हूं मैं, पूरा भेज रहा हूं मैं। आई एम गोइंग टू सेंड फुल। दैट प्रैक्टिस कैसे करना है वो तो मालूम हो गए ना आपको। सर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग ऑन संडे एग्जाम। ओ माय गॉड, चलो ओपन करके दिखाओ क्या क्वेश्चन पेपर। आपको पढ़ना है बेटा, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये क्या है, कौन सा है ये। आपको जो आपको स्क्रीन पे आ रहे हैं ना, वो कहाँ की है? ये एनसीईआरटी का लाइंस है ना, जो हम बोले ना आपको एनसीईआरटी से ही आएगा। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बोले तो क्या मतलब? यहाँ पे तो नियरली 370 क्वेश्चन आर देयर, तो यहाँ से आएगा बोले तो एनसीईआरटी से आएगा। दैट मीन्स ये पूरा एनसीईआरटी का ही है ना, आपको प्रैक्टिस करना होगा बेटा। अच्छा, आपको अनाउंस किया क्या हॉलीडे बोल के? या एनसीईआरटी आपको पढ़ना है? या आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ना है बेटा। बाद में ये आपको यहाँ पे एम्प्टी दिख रहा है ना, सो यू ट्राई योर सेल्फ टू आंसर। अभी तो अच्छा सा आ रहा है। नहीं हम नहीं बोला, आप बोल रहे। इज देयर एनी अनाउंसमेंट फॉर यू? आपको कुछ अनाउंसमेंट है क्या? आप ही डिक्लेयर कर रहे हैं, ग्रुप में ऐसा डिक्लेयर किया तो आपको निकाल देगा बेटा ग्रुप से। ओके, चलो बेटा, shall we continue? Glands which release their products through ducts or tubes are called as। चलो मेरे पहले ही शुरू हो गए आप। एक्सोक्राइन ग्लैंड, वेरी गुड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ज्यादा टाइम नहीं लेगा बेटा हम। दैट मीन्स वी राइट ऑल दीज थिंग्स। अच्छा पढ़ा लिया ना, दैट्स व्हाई विल गेट दिस डायरेक्टली। ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स आर कॉल्ड endocrine glands, very good, endocrine glands. Glands who secrete their products directly into the fluid bathing the gland, endocrine glands. Dash epithelium is made up of more than one layer of cells and thus has a limited role in dash and dash. ये थ्री गैप्स फिलअप करना है आपको। क्या कंपाउंड और क्या है बेटा? इट इज हैविंग लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। कंपाउंड एपिथेलियम का एक ही काम है, प्रोटेक्शन। ओके, कंपाउंड एपिथेलियम विच कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। ये इसमें टाइप्स है बेटा, दैट आई डेंट एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम यू।
वेट ए मिनट। क्या है कंपाउंड एपिथेलियम का टाइप्स है बेटा? चलो ये तो याद रखिएगा, आपको ये तो आंसर तो एनसीईआरटी में नहीं है, बट याद रखिएगा। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम बोलते हैं हम इसको। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज, नहीं क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। कंपाउंड और स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज, ये क्या है बेटा? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज। थोड़ा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम यहाँ पे, दैट्स ऑल। चलो याद रखिएगा, रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है वो, रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज ड्राई सरफेस बेटा, मॉइस्ट सरफेस में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज। ओके, चलो ये तो याद रखिए, एनसीईआरटी में तो नहीं है, कंपाउंड एपिथेलियम ही बोलेंगे हम, बट याद रखिए तो अच्छा रहेगा। कंपाउंड एपिथेलियम का टाइप सही है। ओके, ये और एक है ना, 3 types that not mentioned in the NCERT textbook: stratified cuboidal epithelium। एनसीईआरटी का बेटा, एनसीईआरटी में नहीं है, बट स्ट्रैटिक कंपाउंड एपिथेलियम इज ऑफ 3 types। एक स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बेटा, स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, then stratified squamous non-keratinized and stratified cuboidal। so ये तो एनसीईआरटी में पूरा मिलके एक ही वर्ड दिया बेटा, क्या? compound epithelium covers the dry surface of skin, moist surface of buccal cavity, pharynx and lining of the ducts of salivary gland, पूरा मिलके दिया ना। so उसमें टाइप्स है, जस्ट लिटिल इंफॉर्मेशन वी आर मेकिंग। एनसीईआरटी में है, स्टेट टेक्स्ट बुक में है बेटा, बट अभी बोले ना हम आपको स्टेट टेक्स्ट बुक में नहीं जाने का। स्टेट टेक्स्ट बुक में और एक है ट्रांसिशनल एपिथेलियम बोल के। Dash type of cell junctions are found in the epithelium and other tissues. These are called as, how many types of junctions? 3 types. Okay. And what they are called? What they are called? Tight junction or gap junction or adhering junction. है ना? Tight junction, gap junction and adhering junction. Okay beta. Junctions help to stop substances from leaking across the tissue. Very good. Tight junctions. Junctions which allow the rapid transfer of ions, small molecules and sometimes bigger molecules. Yes, very good. Gap junctions. Junctions which perform cementing to keep neighboring cells together. Yes, adhering junctions. Junctions which facilitate the cells to communicate with each other by connecting cytoplasm of adjoining cells. Communication wala. Yes, gap junctions. They are named dash tissues because of their special function of linking and supporting other tissues or organs of the body. वाओ, इतना फास्ट बोल रहे हैं आप, आपका प्रिपरेशन का टाइम भी नहीं जरूरत है ना? जरूरत नहीं है आपको ज्वालॉजी का प्रिपरेशन का टाइम। In all connective tissues except the dash, the cell secrete fibers of structural proteins called, except blood. एक नहीं बेटा, सब आंसर कर रहे हैं, that is the happiest thing actually. Collagen and elastin fibers. Except blood, that collagen and elastin fibers रहेगा. The fibers which provide strength, elasticity
and flexibility to the tissue are. Yes, which provides strength बोले तो collagen बेटा, and elasticity and flexibility बोले तो elastin fiber. Okay, next, cells which secrete fiber. Cells which secrete fibers. Fibroblast cells, very good. Connective tissue cells secrete modified polysaccharide which accumulate between the cells and fiber act as. Connective tissue cells secrete modified polysaccharide which accumulate between the cells and fiber and act as. Ground substance or matrix, very good. थोड़ा response कम आया but answered. Connective tissues are classified into 3 types. As loose connective tissue एक है बेटा, और क्या बोल रहे हैं आप? Skeletal, smooth, cardiac, muscles है वो. Dense connective tissue, specialized connective tissue, very good. Loose connective tissue, dense connective tissue, and specialized connective tissue. Okay beta, very good. Connective tissue which has cells and fibers loosely arranged in a semi-fluid ground substance. किसके बारे में बोले हमेशा? Yes, loose connective tissue. Fibers and fibroblasts are compactly packed in this connective tissue. गलती से आंसर आए ना यहाँ पे. Dense connective tissue. Okay. Loose connective tissue present beneath the skin. Wow. You people are fast in typing as well as subject also. Appreciating our junior inter students. Okay, beta. Chala, moving on. Loose connective tissue located mainly beneath the skin. Loose connective tissue located mainly beneath the skin. क्या बोल रहे हैं आप? Yeah, we have some little controversy here. या थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बेटा, थोड़ा डिफरेंस है. आप ये चेक करो एनसीईआरटी. Yeah, very good, very good. That's a giving some gap here. Mainly in adipose tissue, with the skin. क्या बेटा? ये टेक्निकल इंपॉर्टेंस तो नहीं है, बट एनसीईआरटी का लाइन इंपॉर्टेंस है. एडिपोज टिश्यू दोनों रहेगा, नो मैटर एट ऑल. डेंस कनेक्टिव टिश्यू इन द स्किन. कौन है बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू इन द स्किन? नहीं, कनेक्टिव टिश्यू को बोलना पड़ेगा आपको. डेंस कनेक्टिव टिश्यू इन द स्किन.
Very good. Dense, irregular connective tissue. टेंडन कनेक्ट्स, इसका तो फास्ट आएगा आंसर, है ना? टेंडन कनेक्ट्स किसको किससे? यस, वेरी गुड. मजिल टू बोन. लिगामेंट्स कनेक्ट. Bone to bone. Very good, beta. Bone to bone. Next, orientation of the fibers show a regular pattern in this dense connective tissue. Orientation of the fibers show regular pattern in this connective tissue. Dense regular or dense irregular? Yeah, it's there in the name. Dense regular connective tissue. Then cells of this tissue, chondrocytes, are enclosed in a small cavities within the matrix secreted by them. थोड़ा वहीं पे रहेगा बेटा आंसर, इधर उधर गए थे हम, दैट्स ऑल. एनसीईआरटी का लाइंस लेके घूम रहे, स्ट्रेट लाइन एक के बाद एक नहीं आ रहे, दैट्स ऑल. कार्टिलेज नॉट स्पेशलाइज. कॉन्ड्रोसाइट देख के आपको रिकॉग्नाइज करना होगा वो कार्टिलेज बोल के. Loose connective tissue which serves as a support framework for epithelium. Yeah, areolar connective tissue. Areolar connective tissue. Beta. Tissue which support and protect softer tissues and organs. क्या थोड़ा confusion हो रहा है ना? Just check the NCERT. That's all. Bone. Orientation of the fibers in irregular pattern in this dense connective tissue. Orientation of the fibers in irregular pattern. In irregular pattern. Yes, beta. Dense, irregular, connective tissue. Cells of this tissue are specialized to store fats. Cells of this tissue are specialized to store fats. Yes, beta. Adipose tissue. Okay, very good. Collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers in this dense connective tissue. Collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers in this dense connective tissue. Okay, beta. Dense, irregular connective. Loose connective tissue which contain fibroblasts, macrophages, and mast cells. Loose connective tissue पूछ रहे हैं हम. Yeah, very good. Areolar. Connective tissue in the tip of nose, outer ear joint between adjacent bones of the vertebral column, limbs and hands in adult. Yes, beta. Very good. Cartilage है वो. Most of the cartilage in vertebrae of embryos replaced by dash in adults. Very good. Bones. Cartilage, bone, blood or belongs to this type of connective tissue. Specialized. Specialized connective tissue. Areolar and adipose connective tissue are belongs to this type of connective tissue. Areolar and adipose. Yes, beta. Loose connective tissue.
They also interact with the skeletal muscle attached to them and bring about movement. They mean this come. They का meaning है. They also interact with the skeletal muscle attached to them to bring about the movements. किसके बारे में बोल रहे हैं? They means bones बेटा. Okay. Dense connective tissue in the tendon and ligaments. कौन सा है? Regular type or irregular type? Yes, very good. Dense regular type. It is the main tissue that provides structural frame to the body. Forms structural frame to the body. Main tissue that provides structural frame to the body. Bone. Very good. Bone hai beta. The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and stored in this tissue. Excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and stored in, yes, adipose tissue. Adipose tissue. Then dense connective tissue which has fibroblasts and many fibers, mostly collagen, which are oriented differently. Yes, beta. Dense, irregular. Intercellular material of dash is solid and pliable, resist compression. किसका? Bone. Bone. सोच के बताइए थोड़ा. Pliable. A word देख के बताइए. Cartilage है बेटा. Pliable का मतलब flexibility. Flexibility. Hard, non-pliable, ये देखिए, which is not flexible. अब बोलो इसका आंसर. Rich in calcium salts and collagen fiber. Then, dash is a fluid connective tissue containing plasma, red blood cell, white blood cells, and platelets. Super. Blood. Each dash is made up of mainly long cylindrical fibers arranged in parallel arrays. Each muscle bundle. The bone cells which are present in the spaces called lacunae are. ये नहीं आएगा शायद. Oh, very good. Osteocytes. Super. सोचे थे नहीं आएगा आंसर. Then, in general, dash play an active role in all movements of the body. Yes, in general, dash play an active role in all movements of the body. कौन है बेटा? Muscle, skeletal muscle, particularly बोलना है तो. Cells in the matrix of cartilage are called. Yes, chondrocytes. Chondrocytes. Muscle fibers are composed of numerous fine fibrils called. Composed of numerous fine fibrils called myofibrils. Yes.
Each organ in our body is made up of one or more types of tissues. आपको ट्रू फॉल्स बोलना है. ट्रू है तो टी बोलो, एफ फॉल्स है तो एफ बोलो. माय गॉड, सब फॉल्स बोल रहे हैं. कहाँ की लाइन बेटा है? आप एक बार ऑर्गन सिस्टम के जाके देखिए. नर्वस टिश्यू होने के बाद एक हेडिंग है, देखो ऑर्गन ऑर्गन टिश्यू. इतने लोग फॉल्स बोल रहे हैं तो ऐसा एक बार आपको दिखाना ही होगा. ट्रू है बेटा, ट्रू. हर एक ऑर्गन का बहुत सा टिश्यूज रहता ना. स्टमक देखो, स्टमक एपिथेलियल टिश्यू रहता, कनेक्टिव टिश्यू रहता, मस्कुलर टिश्यू रहता, नर्वस भी रहता. हार्ट एग्जाम्पल देके बोले ना हम. The dash in some bones is the site of production of blood cells. Yes, beta. Red bone marrow. Next, muscle fibers which are shortened in response to the stimulation and dash lengthen and return to their uncontracted state in coordinated fashion. कब होगा shorten? Gaps fill up करना होगा. NCERT का lines. Yes, beta. Contract and then relax. By stimulation इसका contraction होगा, then after that they get relaxed. The three types of muscles are the three types of muscles are. Yes, very good. Skeletal, smooth, and cardiac muscle fiber. Okay, beta. Their action moves the body to adjust to the changes in the environment and to maintain the position of the various parts of the body. किसके बारे में बोला ये? किसका एक्शन? Yes, beta. Muscle. Muscular action. Okay, bones have dash a ground substance rich in calcium, salts, and collagen fiber, which give bone its strength. Hard and non-pliable. Non-pliable beta. ये NCERT NEET में आया है question. That's why we are talking about this. Dash is the main circulating fluid that helps in the transport of various substances. Yes, blood. Limb bones such as dash of the leg serve weight-bearing function. Long bones को high weight-bearing function. We usually are not able to make it contract merely by thinking about it as we can do with skeletal muscle. The statement is apt for this muscle tissue. किसके बारे में बोला ये? नहीं, स्केलेटल मसल टिश्यू जैसा मूव नहीं कर सकते हम, ये बोल रहे हैं.
We are usually are not able to make it contract merely by thinking about it as. Very good बेटा. आप involuntary बोल सकते आप. Involuntary are examples of involuntary. Smooth and cardiac. If muscle fiber taper at both ends, it can be considered as. Tapering वाला कौन है बेटा? Smooth muscles. Muscles in biceps are. Chal, while writing, and some of the numbers are missed out बेटा. I hope you understand. यहाँ पे 111 आना है, so थोड़ा mistake हो गया. Okay, muscles in biceps are. Yes, skeletal muscles. The wall of internal organs such as the blood vessels, stomach and intestine contain this type of muscle tissue. Yes, beta, smooth muscles. Muscle tissue, which is a contractile tissue present only in the heart. Yes, cardiac muscles. Very good. Units of neural system are. Neuron. Type of muscle tissue which do not show striations. Which do not show striations. Smooth muscle, beta. Very good. Smooth muscles, है ना? Communication junctions at some fusion points allow the cells to contract as a unit. That is, when one cell receives a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract. किसके बारे में बोल रहे? नहीं, कार्डियक मसल इंटरकैलेटेड डिस्क रहता ना, इंटरकैलेटेड डिस्क बोल के बोल दिया बेटा आपको. Intercalated disc between one cardiac muscle fiber to the another cardiac muscle fiber, which brings the information can be carried from one muscle fiber to other. Muscles which are involuntary as their functioning cannot be directly controlled. किस किस को बोले हम? स्मूथ एंड कार्डियाक, है ना? Communication junctions, cardiac muscle fibers are called as. जंक्शंस को क्या बोले हम? अभी ऊपर लिखे थे हम. Intercalated discs. Type of muscle tissue which muscles are bundled together in a parallel fashion. Skeletal beta, only skeletal. Tissue with excitable cells. Nervous tissue, very good. Particularly बोलना है तो neurons of nervous tissue. Okay, type of muscle tissue which muscle fiber taper at both ends. Yes. Smooth muscle. The tissue which exerts the greatest control over the body is responsive to changing condition. Tissue which exerts the greatest control over the body's responsiveness to change. Tissue के बारे में बोल रहे हैं बेटा. Nervous tissue होगा ऐसा. Immediately will respond to the surrounding condition. Type of muscle tissue which a sheath of tough
connective tissues encloses several bundles of muscle fiber. Type of muscle tissue which a sheath of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fiber. Yes, beta. Very good. Skeletal. The dash cell which constitute the rest of the neural system and protect support neurons. न्यूरोग्लियल सेल्स बोलते हैं बेटा हम इसको, न्यूरोग्लियल सेल्स. न्यूरोलॉजिकल नहीं है वो, न्यूरोग्लियल है. Type of muscle tissue with cell junctions hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath. NCERT का ये lines but segregated different places. Cell junctions hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath. थोड़ा सोच के आंसर दे दो बेटा. Very few times you people do mistake, है ना? स्पीड जा रहे हैं ना हम, बट इतना स्पीड आप भी आंसर कर रहे हैं ना बेटा. With cell junction hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath. Yes beta. Smooth muscles. Smooth muscles. Type of muscle tissue, the cell junctions fuse the plasma membrane of the muscle cells and make them stick together. यस बेटा, अब कार्डियक मसल बोल सकते हैं आप. Dash make up more than 1/2 of the volume of the neural tissue in our body. Yes, neuroglial cells. When a neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travel along its along its plasma membrane. Arrival of the disturbance at the neuron endings or dash zone triggers events that may cause. ये गैप फिल अप करना है बेटा. Yes, very good. ये एक पहला आउटपुट जोन है बेटा, आउटपुट. ओके, देन आफ्टर stimulation or inhibition. The basic tissues like epithelial, connective, muscular, neural will organize to dash form what? Yes beta, organs and organ systems बनेगा वो, organs बनेगा, organ systems. Such an organization is essential for the more efficient and better coordinated activities of millions of cells constituting an organism. What do you call such organization? हमारा है वो, organ system grade of organization. Tissues in the heart
Very good. All four. Epithelial, connective, muscular, nervous. Yeah. Complexity in organ and organ system displays certain discernible trend. This discernible trend is called, क्या बोले हम इसको? Evolutionary trend बोलते हैं हम. Evolutionary trend. Morphology and anatomy of three organisms like earthworm, cockroach, and frog are at different evolutionary levels in their organization and functioning. आपको बोलना पड़ेगा बेटा, true or false? True. In the case of plants or microbes, the term morphology precisely means. Morphology का मतलब क्या है? Plants के हिसाब से, microbe के हिसाब से. Study of form or externally visible features. Animals में क्या है बेटा morphology? External appearance. External appearance of organisms, that organs or parts of the body. The word dash conventionally used for the study of morphology and internal organs of the animals, beta, we call it as anatomy. हम बोल दिए इसके. No need to write this. क्या मतलब? आपको एक एम्प्टी शीट आएगा बेटा, आंसर्स नहीं रहेगा वहां पे. यू पीपल नीड टू फिल. चलो शुरू. earthworm, cockroach, frog, but successfully completed स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे क्या है बेटा, आपको ये earthworm छोड़ के, फ्रॉग को छोड़ के बाकी का आंसर करना होगा. दैट सोचे थे हम आपको फ्रॉग होने के बाद भेजना है, बट वी हैव एन एग्जाम नाउ. आपको प्रैक्टिस होना है. एंड समवन, यू पीपल आस्क्ड मी as we'll go for, sir, we'll do, should be getting an OMR sheet on Sunday. ABC कर दो. करो ABC. करेंगे क्या? और क्या, 6 मिनट बचा है बेटा. चलो जितना होगा उतना करेंगे हम. आपको मालूम हो जाएगा बेटा. दैट मीन्स विच वन इज earthworm, which one is cockroach. चलो बेटा. लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी, earthworm, नो डाउट है ना. ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल, यस, कॉकरोच होगा. ओके. ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर्ड एनिमल्स. सी नहीं है बेटा आपको. यू पीपल कांट से अबाउट सी. अभी तो मालूम नहीं है ना. बॉडी सेगमेंटेड या ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन कलर्ड, फ्रॉगी है वो. बॉडी सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन. ये फ्रॉग का है बेटा. सॉरी, कॉकरोच का है. कॉकरोच का है ना. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंट विच आर सिमिलर. ये बताइए 100 सेगमेंट वाला. earthworm, वेरी गुड. बॉडी इज डिविजिबल इनटू, ये हेड, थोरैक्स, कॉकरोच. ये है बेटा आपको अभी नहीं हुआ फ्रॉग. तो ये छोड़ के आपको फ्रॉग का छोड़ के आंसर करना होगा.
Nocturnal omnivores that live in damp places throughout the world. कॉकरोच के बारे में बोल रहे हैं ना, ऑमनीवोर, ये देख के बता सकते हैं हम, ये कॉकरोच है ना। ये देखिए फिर, ये फ्रॉग का है बेटा, ये फ्रॉग का है। But you can answer. Dorsal surface of the body is marked by dark mid-dorsal line along the longitudinal axis of the body. किसका? earthworm. Very good. Earthworm. Entire body is covered by hard chitinous exoskeleton. Super. Cockroach. ये नहीं है फिर, फ्रॉग का है। Anterior end consists of mouth and prostomium. Yes, earthworm beta. Anterior end consists, ventral surface distinguished by the presence of genital openings. earthworm ही है बेटा, earthworm, genital openings रहता है ना earthworm में। ये नहीं है फिर, तो थोड़ा सोच समझ के करो बेटा। Segments of earthworm are called as, segments of earthworm, metameres बोलते हैं बेटा हम। Segments of earthworm are called as metameres. ओ टाइम अप वाला आप जाइए ना, आप क्यों बोल रहे हैं हमको टाइम अप बोल के? Each segment can be called as metamere. आप जा सकते ना, और आप एंड करो सेशन। इतना इंटरेस्ट से बोल रहे हैं बच्चे, आपको इंटरेस्ट नहीं है तो जा सकते ना। चलो बेटा, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। एर्थवर्म, कॉकरोच, फ्रॉग। तो आपको तो एर्थवर्म कॉकरोच तो मालूम है ना, सो दैट्स व्हाई आई थिंक सो फ्रॉग का आप पहचान सकते हैं आप। ओके, सो ये आंसर कर दो बेटा, ये आंसर कर दो। यहाँ पे तो यू आर चैंपियंस है ना। यहाँ पे देखिए, स्पर्मेटिकल पोर, जेनिटल पैपिले, फीमेल जेनिटल पोर, मेल जेनिटल पोर, ऐसा। सो इमीडिएटली आई विल सेंड इट टू यू बेटा, इमीडिएटली आई विल सेंड इट क्लास होने के बाद। अभी एंड अप कर रहा हूं मैं, आई एम गोइंग टू एंड अप द सेशन। ये पूरा क्वेश्चन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बेटा, देन पहले ही बोल दिया ना आपको, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल किंगडम हो गया तो समझो यू आर सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर फर्स्ट ईयर। ओके, आपका कंप्लीशन हो गया फर्स्ट ईयर का। ओके बेटा, थैंक यू। बड़ा चैप्टर है ना वो। थैंक यू बेटा।